Dear students, welcome to Navkar Digital Institute, India's first virtual learning platform for professional coaching. Under the subject of indirect tax law, today we will talk about the chapter Assessment and Audit. When I talk about assessment, friends, we need to keep this in mind that ultimately हर रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करना है, बट कितना टैक्स पे करना, दैट कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड एंड दैट कैलकुलेशन इटसेल्फ इज व्हाट वी कॉल्ड एज असेसमेंट. When you will look at the basic component of the assessment, it covers various types of assessments. The first type of assessment is what we call as self-assessment, and that self-assessment is applicable in case of indirect taxes, even it is applicable in case of income tax. So the first type of assessment that we refer over here is self-assessment. It also covers a reassessment, which is legally what we call as scrutiny assessment when a department serves a notice. It also covers a provisional assessment concept where if at the initial stage the assessment is not feasible, then one can think of provisional assessment. Over and above that, it covers something called as summary assessment, which is a fast track assessment kind of provision, and it also covers something called as best judgment assessments. So various types of assessments are involved under the heading called assessment. And since, as I have said in starting itself, in every tax in India we follow a rule of self-assessment. So a registered person himself is making an assessment. So when he is making an assessment, it requires a thorough checking, and that thorough checking is something which is done with the help of audit. The logic is very clear. Because we go for a self-assessment, so on our own we declare our assessment. We decide that this is our output tax liability, we decide that this is our input tax liability or input tax credit, and ultimately we set off both and we pay the differential amount. So since we pay the differential amount on our own and we declare our assessment accordingly, there has to be a thorough checking, an in-depth checking. Otherwise someone may try and make an evasion. So that thorough checking is done with the help of audit. So as it has been clearly mentioned, it's a tax regime that relies on self-assessment, and that self-assessment has to be verified by way of audit mechanism. So that's the core importance of the topic called as audit. So these two topics is what we need to study under this chapter. Number one is what we called as assessment, and number two is what we called as audit. Now when I talk about assessment, friends, so that starts from section 59 and it is up to section 64. All the sections under this category are covered under the term assessment. Now when I say assessment, so assessment is mainly, as I said, it follows a rule of self-assessment. And basically what is self-assessment? So a registered person, a taxable person himself is required to make an entire assessment. He himself is required to declare value, he himself is required to determine the tax rate and accordingly decide the tax amount, and accordingly is required to pay the tax amount, and that is what we consider as self-assessment. It's a registered person shall himself assess the applicable tax. Now that's the core self-assessment. But what happens is there are certain cases in which self-assessment is not possible, and when it is not possible we always think of provisional assessment, which is governed by section 60. It very clearly says when provisional assessment is applicable. तो कि ऐसा ही clearly बोला है कि when registered person is not able to determine the major determinants. When the registered person is not able to determine the major determinants. Friends, basically value decide ना हो या tax rate decide ना हो is what we called as major determinants. And when the registered person is not able to determine such major determinants, so rather than making himself assessment, he shall approach the department officer who will help him to make the final assessment, and time being he will consider provisional assessment. So what will happen under the provisional assessment is altogether a separate question. We need to study that also, but keep this in mind that two types of assessments are done prima facie. One is what we called as self-assessment, another is what we called as provisional assessment. When I say self-assessment, so the person himself is required to declare value. The person himself is required to declare the tax amount and accordingly finalize the tax amount.
pay the tax amount and give the declaration of the same. When he is not in a position to determine the value or is not in a position to determine the tax rate, he'll always go for what we call as provisional assessment. And self assessment के सारे provision section 59 में है और provisional assessment के सारे provision section 60 में है. So now let us talk about the important part, and that is provisional assessment. Now when we talk about provisional assessment, first of all we have to decide that when it is applicable. So as mentioned over here, when the registered person is not in a position to determine or ascertain, or the second component is in such a scenario or is in such a possibility where it is possible to determine assessment, but it requires lot of time period on the side to determine the value or to determine the rate. So both these components are very relevant. The first thing is what you need to understand is if it is not possible to determine the assessment itself, or it is possible to determine the assessment but it requires a lot of time period, then in that case one should think of provisional assessment. See, always keep this in mind. अगर मान लो कि सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि मैं आज आपको कोई गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ या मैं आपको आज कोई सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूँ and it is not possible to determine the value of goods or services which I am providing to you, then I am thinking of provisional assessment. Similar manner, if it is possible to determine the value of goods or services but it requires a lot of time period to fix the same, then again we'll also think of provisional assessment. So keep this in mind. There are two major determinants of the assessment. Number one is what we called as value, another is what we called as rate. And if it is not possible to determine the value of supply or it is not possible to determine the rate of supply, then in such case we can think of provisional assessment, or it is possible to determine the same but it requires a lot of time. And why I am saying that? Because agar मान लो के I need a time to fix the value, I need a time to fix the rate, so that may get determinable but at a later stage. And today I am supposed to make a self-assessment at the time of making transaction. So how do I determine that? So that is where I am saying कि either it is not possible to determine or it is possible to determine but requires a lot of time and lot of deliberation from our side, then in such case we can think of provisional assessment. So we should apply to the authorities for provisional assessment. And whenever we will make an application, it has to be in prescribed form, and more important, we need to give a reason that why we are not in a position to determine the assessment. The importer, or the person who is making transaction is required to give the reason. Now what can be the reason? So okay, there can be various possibilities. Like first of all, possibility can be that as of now I am supplying certain goods to my customer and I have said to him that if you make payment within 30 days, then at a later stage I will give you discount. So as of now I have some value, but I am not sure that whether that value will become the final value or that value will become the, that value will get reduced at a later stage. So because I am not sure today, so I may think of provisional assessment. Or let us take an example. For example, मैंने फर्स्ट लॉट बनाया और वही लॉट मैं फ्री सैंपल की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ. सो हाउ डू आई डिटरमाइन द वैल्यू? आई हैव सेड टू माय कस्टमर कि भाई फ्री सैंपल है. कोई बोले सर फ्री सैंपल है सर, वो लायबल फॉर जीएसटी है. तो क्या शेड्यूल 1 में कुछ ट्रांजेक्शन्स है जिसमें अगर मान लो कि यही फ्री सैंपल मैं अपने एजेंट को देता हूं आगे बेचने के लिए, तो उस केस में जब मैं एजेंट को दूंगा वो सप्लाई में आ जाएगा और बिकॉज एज पर शेड्यूल 1 वो सप्लाई में फॉल हो जाएगा, तो आई एम लायबल टू पे जीएसटी, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डिटरमाइन द वैल्यू एट दिस स्टेज. या फिर एग्जाम्पल के तौर पे दे दो, एज अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट लॉट जो मैंने मैन्युफैक्चर किया है वो मैं आपको दे रहा हूँ और आप मेरे एजेंट हो या आप मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हो, मैंने क्या बोला हुआ है आपको कि दिस इज द फर्स्ट लॉट एंड यू ट्राई एंड सेल दिस ऑन माई बिहाफ. जो भी प्राइस आएगा उसमें से 10% तुम रखना, बाकी का 90% मुझे दे देना. आई हैव नॉट गिवन यू एनी प्राइस. हाँ, मैंने आपको फिक्स प्राइस नहीं बोला है, मैंने आपको रेंज बोल दिया है कि भाई 100 रुपये से लेके 120 के अंदर बेचना है.
तुम 105 में बेचोगे तो भी मैं परफेक्टली एक्सेप्ट कर लूंगा, तुम 120 में बेचोगे तो भी मैं परफेक्टली एक्सेप्ट कर लूंगा, बट जितने में बेचोगे उसका 90% मुझे देना पड़ेगा, 10% तुम्हारा कमीशन होगा. तो देन इन दैट केस टुडे आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू डिटरमाइन द वैल्यू. और लेट्स पुट इट दिस वे व्हेन आई टॉक अबाउट द टैक्स रेट. सो फॉर एग्जांपल, मैं एक प्रोडक्ट जो आपको सप्लाई कर रहा हूं, वो प्रोडक्ट एक्स कैटेगरी में भी फॉल हो सकता है और वाई कैटेगरी में भी फॉल हो सकता है. So I am not sure which is the correct category, X or Y. If it comes under X, then the rate will be separate. If it comes under Y, then the rate will be separate. So we need to identify whether it is X category or it is Y category. At this stage, it is not feasible. It requires a lot of time period on my side. It requires a lot of efforts on my side to finalize that whether it is X or Y. But at this stage, I can think of provisional assessment. So I need to give a reason to the department officer that this is the reason because of which I am not in a position to determine value or I am not in a position to determine the rate. And since it is not possible to get the same done, so I am applying for provisional assessment. And as and when I'll apply for provisional assessment, the department officer will serve a notice to me asking for additional information, that give us the additional details, give us the exact maybe prescription of the goods, maybe exact description of the goods, maybe the type of transaction that you are willing to do, maybe the range, the price range कि भाई 100 से लेके 120 के बीच में. So they may ask for some sort of additional information and some sort of additional records. ये सारी डिटेल्स जब मैं एप्लीकेशन के टाइम पे सबमिट करूंगा या एडिशनल डिटेल्स सबमिट करूंगा, देन डिपार्टमेंट ऑफिसर विल हेल्प मी टू फाइनलाइज और देन डिपार्टमेंट ऑफिसर विल पास एन ऑर्डर फॉर प्रोविजनल असेसमेंट. तब तक सी इट हैज टू बी इन स्टेजेस. I'll apply for provisional assessment. They will approve my provisional assessment. Once they will approve my provisional assessment, I'll pay provisional duty. Then they will finalize. So sooner or later they will finalize, and when there will be a finalization, the differential amount will be adjusted. So this is only applicability stage. Okay, but you have to apply. You have to apply. When you will apply, we have discussed. When you will apply, so at the point of time they will ask for reason. You give the reason. They may also ask for additional information. When you will submit all these details, now they will take a call that whether provisional assessment has to be accepted or provisional assessment has to be rejected. So let us talk about approval or rejection stage. When we think of application, so now department officer will approve your application of provisional assessment. So considering the request and considering the reason and considering the additional information provided by you, an order will be passed by department officer approving provisional assessment. Over and above that, in assessment order or in the approval order, he will also give an indication with regard to the value or the tax rate or both, as the case may be, based on which the provisional assessment should be done. So technically you have applied for provisional assessment. So now department is asking you to pay tax at the provisional rate. Now what rate? That is also a very important point. So when I say that you have applied, let's say I am not sure with regard to rate of duty or rate of tax. See, I am of the opinion that whether a product can be covered under X category or it can be covered under Y category. If it is under X category, this rate. If it is under Y category, this rate. But the point is now ultimately I should pay tax at what? Should I pay at X rate or should I pay at Y rate? So that also will be indicated in the order of provisional, in the provisional order. So ultimately that authority will pass an order that you have to pay tax at X rate or at Y rate. Similar way, you are dicey with regard to value. See, you have applied for provisional assessment saying that what will be the value, I am not sure. You can give a range that it will be somewhat between 100 to 120. So now the authority will take a call that okay, according to us you should pay tax at 100 rupees value or you should pay tax at 120 rupees value. So basically the proper officer will pass an order considering two things. Obviously number one, he will pass an order permitting provisional assessment. Number two, he will pass an order indicating a provisional value, provisional rate of tax or even both depending on the application that you have made. Now more important is, now whenever there is a provisional assessment, it is also required to be supported by way of some bond. There should be some sort of bond and there should be some sort of security which is associated with that. Why? I'll tell you the reason.
See, whenever we think of provisional assessment, so we give a value from our side, we give a rate from our side, but what is a guarantee that the value or the rate that we have given will be the final value or the final rate? For example, I'll tell you. देखो मान लो कि अगर मुझे लगता है कि my product is liable for tax at the X percentage, let's say 12, or it can be liable for tax at the rate Y percentage, which is 18. When we applied for provisional assessment, department officer passed an order permitting provisional assessment at the rate 12%. If he is passing an order permitting provisional assessment at the rate 12%, then there are two chances in future. Number one, either the finalization will be done at the rate 12 or the finalization will be done at the rate 18. Let us say if the finalization is done at the rate 12, then there is no need to worry because earlier provisional assessment was also permitted at 12. The tax has been also paid at the rate 12 and the finalization has also taken place at the rate 12. Then there is no need to worry at all. But what if, let's say the finalization gets done at the rate 18. So what happens is you have paid tax at the rate 12% and at a later stage the finalization has been done at the rate 18%. So there will be a shortfall of 6% which you are supposed to pay at a later stage. Now the only question is what is the guarantee के बाद में वो 6% हम भरेंगे? So that guarantee has to be given by way of bond. That guarantee has to be given by way of security. So that is where the provision of bond and security comes in. So what will happen is when you will apply for provisional assessment, the department officer will accept your provisional assessment only when you are ready to execute bond, or the amount of bond also depends on the total tax that can be applied at a future stage. For example, I'll tell you this. For example, if I'm dealing in the goods which are liable for tax and the value of goods is 10 lakh rupees. Now the only point with regard to which I'm dicey is with regard to applicability of the tax. If the product is covered under X category, the tax rate will be 12. If the product is covered under Y category, the tax rate will be 18. So there is a shortfall of 6%. See, let us understand 10 lakh के ऊपर 12% के हिसाब से अगर मैं काउंट करूं तो आई नीड टू पे टैक्स ऑफ 1,20,000 एंड अगर वही 10 लाख के ऊपर मैं 18% के हिसाब से काउंट करूं तो आई नीड टू पे टैक्स एट द रेट 18%, सो इट इज 1,80,000. So 1,20,000 is one possible tax amount, 1,80,000 is another possible tax amount. Now let us say department officer is asking me to pay provisional duty as per 1,20,000. So there are future chances that it may get increased to 1,80,000. So some sort of surety is required that the differential 60,000 I'll pay as and when required, and that is where they are asking me to execute a bond and also to furnish a security. When I say security, so what will be the form of security? So the only form which is to be considered under this category is a bank guarantee. Bank guarantee is the only valid form of security under this category which you are supposed to furnish at the time of executing the bond. So along with the bond you will furnish a bank guarantee, and the amount of bank guarantee shall not exceed 25% of the bond amount. So for example, this is just an understanding कि भाई 1,20,000 है जो टैक्स मेरा एप्लीकेबल है जो मैं भर रहा हूँ प्रोविजनली. 1,80,000 is a possibility if the product tax rate is not 12 but 18. So there will be a differential amount of 60,000. So let us assume that the tax authority is asking me to execute a bond of 60,000 rupees. If the tax authority is asking me to execute a bond of 60,000 rupees, then 60,000 is a bond amount of which 25% तक का अमाउंट सिक्योरिटी के फॉर्म में मुझे देना पड़ेगा. सो दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी. सो 60,000 का 25% विल टर्न आउट टू बी 15,000. सो आई नीड टू गिव अ बैंक गारंटी ऑफ एन अमाउंट ऑफ 15,000. Then only they will approve my provisional assessment, or else my provisional assessment will not be approved, and since it will not be approved, my application will be rejected. So this is what we understand as approval stage. See, we have discussed when provisional assessment is applicable. Now we are talking about when provisional assessment will be accepted by the authority. So without their acceptance, you can't straight away follow provisional assessment. So you apply for provisional assessment, and accordingly the department officer will accept your provisional assessment, and that acceptance is what we understand under this category. Now keep this in mind. Once they have accepted your provisional assessment, so that means you are paying provisional duty.
but your provisional duty is not a final duty. So this requires some sort of finalization. And whenever we think of finalization, it may so happen that finalization will now be done by department officer. But to do the finalization, they may need additional information, and that is where they may serve again a notice asking for additional details, that you give so and so details of goods, you give so and so details of services that you have supplied, and based on those additional details or based on those additional records, now they will finalize the tax amount. So it may so happen that finalization के time पे they may again serve a notice and ask for additional details. Once you submit all those additional details and everything, now they have to finalize and they have to pass a finalization order. The general time limit which is given for passing the finalization order is 6 months. Within 6 months from the date of acceptance of provisional assessment, or rather within 6 months from the date of communication of acceptance of provisional assessment, they have to pass a finalization order. As mentioned, the finalization order will come during this period unless the period has been extended. So कोई बोले सर extension का भी possibility है? Yes friends, there is an equal possibility of extension. So okay, when the extension can be granted, so okay, there are two possibilities. Number one, the joint commissioner or additional commissioner can grant an extension after obviously identifying the valid reason, and the period of extension in their case can be 6 months. So original period will be 6 months, which can be extended by 6 months. By whom? By the joint commissioner or additional commissioner. Similar way, if you need a further extension, you need to approach commissioner, and commissioner may extend it for any period, that to up to 4 years. So 4 years तक का extension वो grant कर सकते हैं. So technically what will happen is original 6 months हुआ, then 6 months extension can be granted up to 6 months है. Exactly 6 months होगा वो भी ज़रूरी नहीं है, but up to 6 months extension can be granted by joint commissioner or additional commissioner. And in that line up to 4 years further extension. So initial 6 months हुआ, 6 months का extension joint commissioner additional commissioner ने दिया, but during that period also finalization could not be done. So now we need further extension. So further extension can be granted by commissioner, and that has to be up to 4 years, not exceeding 4 years. तो 4 साल तक का extension grant किया जा सकता है. In and all अगर आप देखो ना तो 5 years का period हो गया maximum. कोई बोले कैसे, तो क्या ओरिजिनल 6 मंथ्स. फॉर एग्जांपल अगर आज की डेट ले ले, लेट्स से 1 अप्रैल 2018 को मुझे प्रोविजनल असेसमेंट ग्रांट हुआ है, तो 6 मंथ्स अगर मैं काउंट करूं तो आई थिंक 30 सितंबर 2018 हो गया. 30 सितंबर 2018 है, वो पीरियड खत्म हो तब तक मैं फर्दर एक्सटेंशन डिमांड कर सकता हूँ. सो आई मीन ओरिजिनली 6 मंथ्स का पीरियड मिला था, अब मैंने जॉइंट कमिश्नर को अप्रोच किया या एडिशनल कमिश्नर को अप्रोच किया कि मुझे आप एक्सटेंशन दे दीजिए ड्यूरिंग विच द फाइनलाइजेशन कैन टेक प्लेस. सो देन 6 मंथ्स एक्सटेंशन कैन बी ग्रांटेड बाय दैट अथॉरिटी. सो दैट मीन्स इट इज 31 मार्च 2019. अगर उस पीरियड में भी फाइनलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो देन कमिश्नर को अप्रोच कीजिए एंड दे विल ग्रांट अ फर्दर एक्सटेंशन, एंड हियर द पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 4 years. सो दैट मीन्स 31 मार्च 2019 से 4 और साल, दैट मीन्स 31 मार्च 2023. सो टेक्निकली अगर 1 अप्रैल 2018 से गिनोगे तो 31 मार्च 2023 जहां आपके 5 साल खत्म होते हैं वहां तक का एक्सटेंशन पॉसिबल है. बट अल्टीमेटली फाइनलाइजेशन ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू बी पास. चाहे आज पास हो, महीने बाद पास हो, 2 महीने बाद पास हो, 6 महीने बाद पास हो, 2 साल बाद पास हो, 5 साल के अंदर कहीं ना कभी फाइनलाइजेशन करना ही पड़ेगा. एंड जिस दिन फाइनलाइजेशन हुआ ना, 2 क्वेश्चंस बीच में आएंगे फ्रेंड्स. नंबर 1, व्हेन आई से फाइनलाइजेशन, तो कि फाइनलाइजेशन इज डन एट व्हाट अमाउंट? इज इट डन एट अ हायर अमाउंट? इफ इट इज डन एट अ हायर अमाउंट, सम टैक्स विल बिकम पेएबल. So now you have to pay that tax, and whenever you have to pay that tax has to be paid along with interest, and interest at a rate which is provided under section 50. And what is an interest rate provided under section 50? Currently it is 18%. See, you need to understand, जो टैक्स मुझे प्रोविजनल असेसमेंट के टाइम पे मैंने भरा था वो मेरा एक्चुअल टैक्स तो था नहीं, वो तो एक प्रोविजनल अमाउंट मैंने भरा था. बाद में फाइनलाइजेशन हुआ कि ये अमाउंट कम है,
और फाइनलाइज अमाउंट उससे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली मैं बाद में डिफरेंशियल अमाउंट भर दूंगा। बट डोंट यू थिंक सो कि ये अमाउंट तो मुझे पहले ही भरना था जो मैं बाद में भर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट उस पूरे पीरियड का तुमसे क्या डिमांड करेगा, तो कि डिपार्टमेंट उस पूरे पीरियड का तुमसे इंटरेस्ट डिमांड करेगा। लेट अस टॉक अबाउट द टाइम लाइन कि भाई अप्रैल 2018 का ट्रांजेक्शन है जब प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था और फाइनलाइजेशन 2021 में हो रहा है, तो ऑब्वियसली डिफरेंशियल अमाउंट तुम 2021 में भरोगे जबकि प्रोविजनल अमाउंट तुमने ऑलरेडी भर दिया था 2018 में। बट फाइनलाइजेशन हुआ उसका मतलब तो ये है कि फाइनलाइजेशन हायर अमाउंट पे हुआ, दैट मीन्स ओरिजिनली वो ज़्यादा अमाउंट भरना था जो तुम 2-3 साल बाद भर रहे हो, तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट उसका इंटरेस्ट तो लेगा ही तुमसे। सो वही इंटरेस्ट तुम्हें भरना है एट द रेट 18% पर एनम के हिसाब से। कोई बोले सर उसमें भी इंटरेस्ट का पीरियड कितना गिनना पड़ेगा, तो दैट इज वेयर इट हैज बीन वेरी क्लियरली मेंशन एज इंटरेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। फॉर एग्जांपल अप्रैल 2018 का ट्रांजैक्शन है तो व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, तो कि अप्रैल महीने का टैक्स भरने का ड्यू डेट यानी GSTR 3 के साथ हम लोग टैक्स भरने का डेट मानते हैं, सो दैट मीन्स 20 मई 2018। सो 20 मई 2018 को तुम्हें टैक्स भरना था, 20 मई 2018 को तुम्हें टैक्स भरना था। अब ये टैक्स तुम कब भर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 2021 में, तो क्या कौन से दिन भर रहे हो, जिस दिन भरोगे उस दिन के तक का सारा पीरियड काउंट होगा फ्रॉम 20 मई 2018 टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। पूरा पीरियड, उस पूरे पीरियड के लिए मुझे जो डिफरेंशियल अमाउंट है यानी 1,20 और 1,80 के बीच में यानी 60,000, तो 60,000 का जो अमाउंट है उसके ऊपर 18% के हिसाब से इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। दिस इज व्हाट विल हैपन व्हेन योर टैक्स बिकम्स पेएबल, दैट मीन्स योर फाइनलाइजेशन गेट्स डन एट अ हायर अमाउंट. At the same time, if the finalization gets done at a lower amount, then whatever amount that you have paid as in excess will be refunded. कोई बोले ऐसा कैसे हो सकता है? Let us understand this. देखो, मैंने अप्लाई किया था प्रोविजनल असेसमेंट के लिए जहाँ पे 12% और 18% दो ऑप्शन थे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट का ऑफिसर मुझे बोले कि ओके पे टैक्स एट द रेट 18 ओनली, नॉट एट 12। प्रोविजनली भरना है बट पे एट द रेट 18, वाई एट 12? तो क्या अगर वो मेरे से प्रोविजनली 18 भरवा दे तो क्या नहीं से मैं तो मैक्सिमम अमाउंट भर चुका हूँ ऑलरेडी। तो अगर मैक्सिमम अमाउंट भर चुका हूँ तो अब दो पॉसिबिलिटी होगी फाइनलाइजेशन के टाइम पे, या तो 18 पे ही फाइनल होगा या तो 12 पे होगा। अगर मान लो कि 18 पे हुआ तो मुझे क्या टेंशन है, 18 भरना था, मैंने तो भर दिया था ऑलरेडी, तो कोई लेना देना ही नहीं है। बट अगर मान लो कि फाइनलाइजेशन 12 पे हुआ है तो मैंने भरा था एट द रेट 18 और अब फाइनलाइजेशन 12 हुआ है तो केनाई से मैंने कुछ एक्स्ट्रा टैक्स भरा था एंड दैट टैक्स हैज टू बी रिफंडेड टू मी। सो दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड एज टैक्स बिकम्स रिफंडेबल. So whenever tax becomes refundable, so obviously you are eligible to obtain refund, and that refund also is required to be obtained at the rate, obtained along with interest. But now keep this in mind: the interest rate will not be 12 or 18%, which is there at the time of payment. Now the interest rate will be prescribed under section 56, and let me be very frank, under section 56 जो current interest rate prevail कर रहा है वो hardly 6% है. सो याद रखना कि अगर पेएबल हो रहा है ना तो इंटरेस्ट रेट इज एज पर सेक्शन 50 दैट इज 18% करंटली, एंड अगर रिफंडेबल है तो इंटरेस्ट रेट इज एज पर सेक्शन 56 विच इज 6% करंटली. सो टेक्निकली दोनों में से कोई भी एक पॉसिबल होगा. अगर पेएबल हुआ तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा एट द रेट 18%, अगर रिफंडेबल हुआ तो इंटरेस्ट मिलेगा आपको एट द रेट 6%. सो एज द केस मे बी एप्लीकेबल ओवर हियर. अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब पेएबल होता है ना तो हम इंटरेस्ट पे तो करते हैं 18%, बट योर टाइम पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एंड इट इज देयर टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट. जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा रिफंडेबल में. रिफंडेबल में तो क्या बोला है, तो कि अगर मान लो कि फाइनलाइजेशन लोअर अमाउंट पे होता है तो ओके इट इज रिफंडेबल, पर रिफंडेबल है तो तुम्हें रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. जिस दिन तुम अप्लाई करोगे, ऐसा नहीं कि ऑर्डर आया तो सीधा रिफंड मिल जाएगा, अभी तुम्हें एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा. जिस दिन तुम एप्लीकेशन सबमिट करोगे, सेक्शन 54 में उसकी एप्लीकेशन होती है, तो जिस दिन तुम उसकी एप्लीकेशन सबमिट करोगे वहां से 60 डेज तो डिपार्टमेंट को चाहिए प्रोसेसिंग के लिए. तो वो 60 डेज के अंदर अगर एक भी दिन पैसा वापस मिल गया ना तो बस इंजॉय, पैसा मिल गया तुमको, उसके अलावा कुछ नहीं. बट अगर 60 डेज तक पैसा वापस नहीं मिला तो फ्रॉम 61st डे द इंटरेस्ट कैलकुलेशन विल स्टार्ट एंड दैट टू एट द रेट 6% पर एनम. सो फॉर एग्जाम्पल अप्रैल 2018 का ट्रांजैक्शन था, मैंने मई 2018 में 18% के हिसाब से टैक्स भरा था.
फाइनलाइजेशन ऑर्डर आया 2021 में, वेरी स्पेसिफिकली डेट ले ले तो कि अगर मान लो कि डेट इज़ 4 सितंबर 2021 जब फाइनलाइजेशन ऑर्डर आया, अब वहाँ से 4 सितंबर 21 को तो ऑर्डर आया, वहाँ से 60 डेज नहीं गिनने गए, उसके बाद तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 4 सितंबर 2021 को जिस दिन ऑर्डर आया उस दिन ये प्रूव हो गया कि ओके तुम एलिजिबल हो रिफंड के लिए, बट अभी तक तुमने अप्लाई किया, तुम अप्लाई ना करो तो डिपार्टमेंट क्यों रिफंड ग्रांट करे? सो नाउ यू नीड टू अप्लाई. सो ओके, दैट इज वेयर यू कंसिडर सेक्शन 54, रिफंड वाला सेक्शन है. रिफंड वाली जो हमारे वीडियोस है उसके अंदर आपने देख लिया होगा ये. तो सेक्शन 64 में हम रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं. तो कि जब हम अप्लाई करेंगे रिफंड के लिए तो जिस दिन हमने अप्लाई किया ना वहाँ से वो लोग 60 डेज लेंगे प्रोसेसिंग के लिए. अगर वो 60 डेज में उन्होंने रिफंड दे दिया ना तो ठीक है, अगर वो 60 डेज में उन्होंने रिफंड नहीं दिया ना तो अब बाद में जब देंगे ना, दैट इज 61st. सो फॉर एग्जांपल 4 सितंबर 2021 को ऑर्डर आया, मुझे अप्लाई करना है रिफंड के लिए, मैंने अप्लाई किया 8 अक्टूबर 2021 को. अब 8 अक्टूबर 2021 को अगर मैं अप्लाई करता हूं तो 8 अक्टूबर 2021 से 61st डे गिनने का, 60 डेज गिनने के, तब तक का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. अब मान लो कि हम लोग काउंट करेंगे यहाँ पे 23 डेज अक्टूबर के, देन 30 डेज हम लोग काउंट करेंगे नवंबर के, और 7 डेज हम लोग काउंट करेंगे दिसंबर के. 7 दिसंबर 2021 को 60 डेज खत्म होते हैं. क्या 7 दिसंबर 2021 तक डिपार्टमेंट ने मुझे पैसा वापस दिया? अगर दे दिया तो दे दिया, नो प्रॉब्लम, खाली पैसा ही वापस मिलेगा. भले ने मैंने भरा था मई 2018 में तो भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, खाली पैसा वापस मिलेगा. बट अगर मान लो कि 7 दिसंबर 2021 तक वो मुझे नहीं देते हैं वापस पैसा, तो फ्रॉम 8th दिसंबर विच इज 61st डे, फ्रॉम 8th दिसंबर 2021 द इंटरेस्ट कैलकुलेशन विल स्टार्ट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 6% पर एनम, एंड दैट टू द इंटरेस्ट कैलकुलेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 8th दिसंबर. सो अगर 8th को दे या 9th को दे या 10th को दे, फॉर एग्जाम्पल 10th को दे तो मुझे 3 दिन का इंटरेस्ट मिलेगा, 8th 9th एंड 10th, उसके अलावा कुछ नहीं, वो भी 6% पर एनम के हिसाब से. सो जस्ट कीप दिस इन माइंड कि व्हेन इट बिकम्स पेएबल द क्राइटेरिया इज क्वाइट डिफरेंट, व्हेन इट बिकम्स रिफंडेबल द क्राइटेरिया इज क्वाइट डिफरेंट. व्हेन इट बिकम्स पेएबल यू पे अलोंग विद इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट रेट विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टिल द डेट ऑफ एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट. And when it is refundable, your refund amount will be granted to you, but that will be granted without interest prima facie, because जिस दिन ऑर्डर आया वहाँ से तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा. जो अप्लाई करने के लिए हम लोग सेक्शन 54 के क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, और जिस दिन तुम अप्लाई करोगे वहाँ से भी अगर 60 डेज के अंदर रिफंड आ गया तो नॉन इंटरेस्ट, अगर 60 डेज के बाद रिफंड का ऑर्डर आता है तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन विल स्टार्ट, एंड दैट टू एट द रेट 6% पर एनम. वो एक दो सम करेंगे तो आपका ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा उसके ऊपर, बट प्राइमा फेसी आई थिंक प्रोविजन वाइज सबको समझ में आएगा. ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि फाइनलाइजेशन में पेएबल हुआ या रिफंडेबल हुआ, अगर पेएबल हुआ तो आपको ऑन द स्पॉट पे करना है, और विथ इंटरेस्ट जितना डिले करोगे उतना इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा. अगर रिफंडेबल हुआ तो जैसे मैंने बताया कि आप एप्लीकेशन सबमिट करो और 60 डेज वेट करो, अगर 60 डेज के बाद आया तो इंटरेस्ट आएगा. नाउ इंटरेस्ट में जो सबसे पहले और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बीच में आएगा, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट. व्हाट इज दिस प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट? लेट अस टॉक अबाउट द सेम, फ्रेंड्स. When I say unjust enrichment, in legal terminology we call it as no person shall enrich himself. No person shall enrich himself at the cost of another person. Enrichment is benefit. So no person shall benefit himself at the cost of another person. कोई बोले सर ये प्रोविजन यहाँ क्यों बीच में आता है? So let us understand this. Whenever we talk about indirect taxes, we need to understand that we are paying taxes as a supplier, as a producer, as a trader, as a service provider. But we don't pay tax from our own pocket. Rather, we always get it from our customer. So since we get it from our customer, we collect the tax amount from customer and then we get the same deposited to the government. The point is, अगर मान लो कि 18% पे प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था और बाद में फाइनलाइजेशन 12% पे हो रहा है, तो द कंसर्न इशू इज जो 18% पे प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था और जो फाइनलाइजेशन 12% पे हुआ है, तो 6% रिफंडेबल तो है, बट एट हुज कॉस्ट आई एम थिंकिंग ऑफ दैट रिफंड. कोई बोले माने एग्जैक्टली क्या? सो लेट अस अंडरस्टैंड. देखो, मैंने 18% टैक्स गवर्नमेंट को भरा एज अ प्रोविजनल टैक्स,
Now the finalization is done at 12%. But the point is, ये 18% मैंने कहाँ से भरा? अपनी जेब से भरा? No friends, it's an indirect tax. So 90% केसेस में तो क्या होगा, ये टैक्स का बर्डन हम ऑलरेडी अपने कस्टमर से पास ऑन कर चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर नवकार की बात करें, नवकार जो सर्विस दे रहा है उनको डाउट है कि भाई 18% है क्या 12% है. सो नवकार प्राइमा फेसी प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई करता है. गवर्नमेंट प्रोविजनल ऑर्डर में ये बता रहा है कि अभी 18% भरो, बाद में देख लेंगे. तो ये जो 18% है वो नवकार ने अपनी जेब से भरा है कि स्टूडेंट्स कस्टमर से लेके भरा. अगर मैं अपने रेसिपिएंट से 18 लेता हूँ और वो 18 में गवर्नमेंट को देता हूँ और बाद में फाइनलाइजेशन ऑर्डर 12 पे आता है और मैं गवर्नमेंट से 6% रिफंड मांग रहा हूँ, तो क्या ये 6% का बेनिफिट मैं अपने कस्टमर को पास ऑन करने वाला हूँ? क्या मैं उनको रिफंड देने वाला हूँ? अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज आई एम एनरिचिंग माई सेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ माई कस्टमर, बिकॉज वो कस्टमर से 6% लेके ही मैंने गवर्नमेंट को भरा था. अब वो 6% गवर्नमेंट मुझे वापस दे रहा है बट मैं कस्टमर को पास ऑन नहीं कर रहा हूँ. If that is the case, then technically it is a big problem because you are enriching yourself, you are benefiting yourself at the cost of the customer. And if that is the case, then it is the worst thing that can ever happen. So keep this in mind.